appears today being Diwali, political fireworks have also been fired on the Diwali morning by the Prime Minister, with the Festival of Lights falling on the same day as the Rashtriya Ekta Divas, which marks Sardar Vallabhbhai Patel's birth anniversary. The Prime Minister in Kevadia spoke about the same. In fact, at the foot of the Statue of the Unity, he delivered an assessment of the situation of the country and how far we've come. He flagged big bang reforms that his government is eyeing, such as one nation, one election and a secular civil code, but also warned about how there are forces working internally and externally to dampen India's Viksit Bharat prospects. He said that these urban Naxals and their plots need to be exposed, and in light of this, the Prime Minister added, "Ek hai to safe hai." और आज कोई अगर कह दे कि एक है तो सेफ है, तो ये लोग एक है तो सेफ है उसको भी गलत तरीके से परिभाषित करने में लगेंगे। जो लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, जो लोग समाज को बांटना चाहते हैं, उन्हें देश की एकता अखर रही है। भारत आज वन नेशन, वन सिविल कोड यानी सेकुलर सिविल कोड की तरफ भी बढ़ रहा है। और मैंने लाल किले से इस बात का जिक्र किया था। इसके भी मूल में सामाजिक एकता, सरदार साहब की बात ही हमारी प्रेरणा है। इससे अलग अलग सामाजिक वर्गों में भेदभाव की जो शिकायत रहती है, उसे दूर करने में मदद मिलेगी। भारत के भीतर और भारत के बाहर भी ऐसे लोग भारत में अस्थिरता, भारत में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। Now, taking cue from the Prime Minister, the BJP also unleashed a blistering attack on the opposition, stating that division is part and parcel of what the party's rivals bring to the table, as the ideology of divide and rule runs deep in their veins. प्रधानमंत्री जी का ये कहना कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, तो इसमें दिक्कत क्या है? क्या देश को एक नहीं रहना चाहिए, एकजुट नहीं रहना चाहिए? ये लोग जो देश तोड़ने वाले लोग हैं, ये नहीं चाहते हैं कि देश की एकता बनी रहे। ये चाहते हैं कि देश कमजोर हो। आज वन नेशन वन इलेक्शन पे हम लोग सोच रहे हैं, हर चीज कह रहे हैं। प्रधानमंत्री ने तमाम बातों की जिक्र की और ये बहुत जरूरी था। एक तरफ तो सरदार पटेल और उनके अनुयायी भारत को एक रखना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, पर जिनके अंदर अंग्रेजों का वही डिवाइड एंड रूल डीएनए है, राजनीतिक चरित्र है, वो भारत को पहले धर्म के आधार पर बांटते थे, फिर उसके बाद भाषा के और अब जाति के आधार पर भी बांटना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि भारत बटे तो भारत कमजोर हो और भारत के दुश्मनों को एक मौका मिल जाए कमजोर हुए भारत के सामने। भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनी। भारत आज विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बना है, लेकिन देश के अंदर अर्बन नक्सल के षड्यंत्र, उनका इकोसिस्टम लगातार भारतीयता, भारत की सनातन सोच, राष्ट्रीयता पर लगातार प्रहार कर रहे हैं। भारत के इंस्टीट्यूशंस को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके सभी षड्यंत्र निष्फल होंगे। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बात कही है वो देश की एकता और अखंडता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन है। पूरा देश राष्ट्रीय एकता के रूप में इसको मना रहा है और एक राष्ट्र और एक चुनाव यदि संभव होता है, जो निश्चित रूप से होगा, तो उससे देश का बहुत बड़ा पैसा जो व्यर्थ खर्च होता है वो वापस अर्थव्यवस्था में आएगा और उससे हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। कुछ लोग अपने राजनीतिक कारणों से इसका विरोध कर रहे हैं। मैं नहीं समझ पाता हूं, यदि एक साथ सारे देश में चुनाव हो
तो उनको उसमें क्या आपत्ति है? So the Prime Minister had an important message. In his address, he spoke about one nation, one election, one of the key planks of the BJP government, while he also spoke about the Uniform Civil Code. He also trained his guns at the opposition as he went on to say that there are some forces within the country and outside the country that are trying to halt the development agenda of the nation. My colleague Pragya is joining us on the broadcast with the details. Pragya, this was a significant message that the Prime Minister gave. It was on the day of unity as well, as the Prime Minister said that there are some who are working internally and externally to dampen India's Viksit Bharat prospects. You're absolutely right. The PM's remark came on Rashtriya Ekta Divas, and I would say this is one of the most important days for Prime Minister. Prime Minister has been looking for opportunities also to send across a message of the unity to the country, and in fact he did that today on this particular event, and which is the birth anniversary of Sardar Vallabhbhai Patel. In fact, if you have heard Mr. Prime Minister, he specifically focused on the challenges before the country and also what government did in past 10 years to ensure that the Constitution and its principles that are enshrined in the Constitution are implemented with principle, with its spirit and letter. While his government is trying to ensure that the one Samvidhan and one Nishan and one Pradhan will be implemented across the country, Jammu and Kashmir, there was abrogation of 370. Prime Minister hailed the move and said that this is truly in the sense that the Constitution is implemented across the country, and Baba Saheb would be very happy, today, given the fact that there is no do Vidhan, do Samvidhan. And also not just that, Prime Minister spoke extensively on the divisive forces within the country and outside the country as well. He also knows that India is fastest growing economy, also growing in stature across the world, despite the fact that there are nations who are fighting each other. Therefore, he said that, we are preaching, principles of Buddha at a time of Yuddha. Yes. So there is also a message of peace in Prime Minister's speech, and also Prime Minister knows that the unity is very important for the sovereignty and integrity of the country, and that is why he is. In fact, he ensures that every Diwali he goes to the soldiers, he celebrates his Diwali with the soldiers, and also a message is to boost the morale of the soldiers, to say that the head of the country is with them. When they are not with the families, these soldiers are the families for Prime Minister. And this is a very, very big message that is going across to the army and also boosting their morale. Absolutely, and it's a message that the Prime Minister has been giving unwaveringly every single year on Diwali as he spends it with the Jawans. Thank you for joining us with those details, Pragya. But while the Prime Minister had that message of unity that he spoke of, the opposition seemed to have its own thoughts on the Prime Minister's remarks. The Samajwadi Party sees the BJP's fears in Prime Minister Modi's unity pitch. The Congress Party seems suspicious about whether the Prime Minister wants unity or uniformity. And the Congress President Mallikarjun Kharge has flat out said that one nation, one election is impossible. What Modi tells, he won't do it, because unless in Parliament it comes, he has to take everybody into confidence. Then only this will happen. But it is impossible. It is impossible. One nation, one election, impossible. Because several states, several problems, and regional parties are there. But simply he is telling everything which is not possible. There is no problem in either of the slogans. It depends on what are you conveying. See, batenge to katenge, fair enough. Everybody says people should be together. If you are not, people will divide you. Ek hai to safe hai, that's also true. But what comes in your ek hai? Kaun hai usme? आप एकता की बात करते हैं या एक मतता की बात करते हैं? Unity or uniformity? Our lack of uniformity, but our unity in our diversity is the biggest strength of India. And if the Prime Minister echoes that, if Mr. Yogi echoes that, fair enough. Sometimes what is suspected is that you are talking of unity in the manner in which you believe there should be a uniformity, and that I don't think that is the spirit of India. भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है, एक तरफ से दिल्ली से बयान आते हैं, दूसरे तरफ उत्तर प्रदेश से बयान आते हैं। पीडीए की ताकत बड़ी है, पीडीए सेफ हुआ है अपने अधिकारों को लेके, अपने हक को लेके। पीडीए वो बंटने नहीं जा रहा है,
वो एक हो गया है, सेफ हो गया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी वो विचलित है, परेशान है, हताश है, निराश है। भारतीय जनता पार्टी वो इस बात को जान गई है कि उत्तर प्रदेश में हो रहे बाई इलेक्शन में और देश में हो रहे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हारने जा रही है। इसलिए तरह तरह के नारे दिए जा रहे हैं।